In English, let us save our land. Let us save our land, a beautiful land and water. Aimol land. Aimol has a beautiful land and water. Let us save with unity. Iram. Aimol land has a plenty of resources to eat and drink. Let us save by loving one another. Many foreigners have occupied our land. Let us save our land. जमीन और पानियों को बचाने दो. हमारे अनमोल भूमि, अनमोल में एक सुंदर भूमि और पानी है. हमें एकता को साथ बचाने लिए आयरम. अनमोल भूमि में एक भरपूर संसाधन है खाने और पीने के लिए. हमें एक दूसरे से प्यार करके बचाना. कई विदेशियों ने हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया. हमारे अपने जमीन को बचाने में फिर भी दिले हिंदुस्तान है. और माय नेक्स्ट पॉइंट, हम इन ले तनोनी अथें साफाए कंकुई खीरेत इलों हम कीर नोनी वेखत रेते अतान सा सिक्तुये तुइव कर रोवा वेखत रेते हम कीर खीर नोनी जोतिंग चाय अचांगे असून हाइदे हम इन ले तनोनी रात अनुम अल्लो में ड्रोन लितांगे खीर इन ले तनोनी चाहपी कोए लाई अनफू में अथा अंतिम रसियन ले अहम सोए वाइलिन कोए सिमले अकन फू में अथा अतिन अल्लेसिए हम कन फू में बाल कोए सिमले अकन फू में अथा ने तीन सेलें अहम सोए मिरिंग तकरों कोए सिमले अकन फू नुम वैखत रे हम की रोने वैखत रे हम की रोने in English will never come back. Even we recall the past time, it will never come back. Water of the stream will never return to its original place. Zolting, a name of a girl, got married, leaving behind her family. She will never return to its original place. Stone rolling from above, which reached the plain, will automatically never return to its original place. Rice buried under the soil, when the time comes, it germinates. Maize buried under the soil, when the time comes, it germinates. When alum buried under the soil, when the time comes, it germinates. But the human crops buried under the soil will never return again. It will never come back again. Wow. In Hindi, कभी वापस नहीं आएगा. भले ही हम पिछले समय को याद कराते हैं. एक धारे का पानी अपने मूल स्थान पर लौटेगा नहीं, कभी नहीं होगा. जो दिन लड़की के नाम की शादी हो गई, अपने परिवार को छोड़कर वह पहले की तरह कभी वापस नहीं आएगी. ऊपर से लुढ़कता हुआ पत्थर जो मैदान में पहुंच गया है, वचालक रूप से अपने प्रारंभिक स्थान पर कभी नहीं लौटेगा. मिट्टी के नीचे दबा हुए चावल जब समय आता है तो जा अंकुरित होता है. मक्की को मिट्टी के नीचे दबा दिया, जब समय आए है तो जा अंकुरित होता है. पिता खीरे मिट्टी के नीचे दफन, जब समय आता है तो जा अंकुरित होता है. लेकिन मनुष्य लाश मिट्टी के नीचे दबे गए, कभी वापस नहीं आएगा, कभी वापस नहीं आएगा. My last point, Loi Labui. This is a rhymes. Lam lienong kaloye, lam sinong kaloya ae. Wow, very good. Thasam lam ta parikyare loi labui e.
Hurasinom kasinge Kuralianom kasinga Karolen sang kurte he sing the bui in English. No bypass. I can bypass either the narrow or the broad part, but I cannot bypass the way of death. I can fill up either the big or the small piece, but I cannot fill up my tiny thought. हिंदी में कोई bypass नहीं. मैं या तो व्यापक या संकीर्ण bypass कर सकता हूँ, लेकिन मैं मौत का रास्ता में bypass नहीं कर सकता. मैं या तो छोटा या बड़े गले भर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने छोटा गले को कभी नहीं भर सकता. Yes, भर सकता. When I fill up my tiny thought, I will die. And then we will never bypass the way of death. मौत का रास्ता हम bypass नहीं कर सकेगा. हम सब हिंदुस्तान क्या करेगा. जय हिंद. धन्यवाद छोटे आईमोल जी. और मित्रों, मणिपुर से अब मैं आपको आसाम की तरफ ले आता हूँ. हमारे बीच हैं दिमासा भाषा के श्री मुक्तेश्वर कैंपराई जी. गुड आफ्टरनून. प्रणाम करता हूँ सभी साहित्य प्रेमियों को. मैं असम से आया हूँ. मैं असम का जनजाति नॉर्थ ईस्ट इंडिया. मेरा भाषा दिमासा. मैं पहले दिमासा से रिसाइटेशन को, उसका बाद ट्रांसलेशन. गराव जमा माइबा निकोलो साहित्य अकादमी भारत मुख्री गराव रेपने आं वाइसलाखा गराव खे रेपने. गराव हा दं बांला राजा आरि खिदिमा इसाइदनि सा सिनि हाजाइबा इलाउब्रा सांगिब्रा दिखंहा. बांला राजा जाखा फारलांनि बफा आरि खिदिमा जाखा फारलांनि बमा. बांला राजानि फाइरेन एदेहे गाबां गालावनि बब्रा. राजानि फाइरेन जाखा गारा जाबा मुलुगनि. आरि खिदिमानि फाइरेन जाखा आरखे रिखिहि दिमा बसावहा दंबा. बांला राजा गेदे बांला राजा अदे आरि खिदिमा बसाथुसिनि बुमु सिब्राय वा राजा दु राजा नायकु राजा गुनयुं ब्रायुं हामियादाव. जासायनि गारावहा दं सुबुं हाजाइबा आफ्रिकानि नील दिखं देरगंहा. नानि लामानिफ्रां गाराव स्लाइबा नील गाराव थाइबा. मिसर हादिं बाइब्लिक थाइबार थाइग्रि जायि फाइबा. अस्ट्रिक अफगानिस्तान हारावफा मांदावरु जायि सफाइबा. साइनब्रियाहा दंहिबा माइथाइ रिजिं खन थावया. साइननि बिनि को हाथानहा सिंगा गलाइया. मंगलियाहा दंहि फाइबा माइथाइ रिजिं बुआ थावया. मंगलिया हाथानि फाइरेन जाखा हादिं बासावनि दं गोजाम सुबुं. सिन दिखंहा मागनि दिखं वांगु यां सिटियां दंहिबा. वांगु फाइरेन जाखा हा गुवानि दिखं अदे यां सिटियां फाइरेन जाखा दिखं गेदेनि दि गेदे. अराहा दंबाहा सुबुं बुथु थिख्रिबा. जिं हां गलाम माइबा दि बड टिबेट हाथानहा. दि बड जाखा दिमागाराव फाइरेन दि बड जाबा. हिमालय हादिं गाफ्लायि हादिं याराय हा दं फाइबा. बुमु माबा राय लिम्बु मगर तामां थिहि. मनालिया दंहि हिरिन दिखे सुआबा. गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र बराक दिखं नारहा दं बुबा. एबो बुथु दिखंहा
Dongba, Degau Fabuba, Jing Bumu Maiba, Dimasa, Boro, Khus, Raba, Hajung, Garo, Chiwa, Chitra, Deuri, Kengal, Sonol, are given, Mayday, Duham Nayala, Kribo, Jini, Hain Tise, Andini, Jini Dadike, Eraha, Goron Faihi, Angabangning, Kazalaka, Hamdauka, Kripne, Ang Yausandi, Kilimladu, Abi May English man. I received an information from Nicholas Sahitya to focus an oral letter, sir, to feel right the fact that history depicted that Bangla Raja and Arikidima were the husband and wife. Born 7 sons on the confluence of river Ilau, Disang. Bangla Raja has a father of the universe. Arikidima was a mother of universe. Bangla Raja means owner of the plenty and vast land. Raja means became all and owner of the world. Arikidima word indicated having a shelter with the Bangla Raja on the ocean. Has 7 sons of Bangla Raja and Arikidima named Sibarai, Waraja, Duraja, Naikuraja, Gonyung, Baryayung, and Hanyadao. In a practical matters, humankind born first on the bank of River Nile in Africa. River Nile derived from Nani Lama, a Dimasa word. We came here via Egypt, Byblit, Khyber, Tigri. We reached here via Ashik, Afghanistan, Harappa, Mahenjo-Daro. Spent in Siberia more than 20,000. Siberia derived from Siberia means not Rajasthan's race. Sur. Spent in Mongolia more than 5,000. Mongolia means indigenous tribal inhabitant of highland. 7 in the Spain on the bank of river Huangpu, Yangtze in China. River Huangpu means river in the vast land. So Yangtze means big water of the great river. Goes more deep here by natural calamity. Here, we went up and secured life at a place of Dibodo, Tibet. Dibodo means frozen water, distorted later as a Tibet, a Dimasa word. We came to know as a Rai, Limbu, Magar, Tamang, and others, and Métis worship Devi Hirimba, staying in Manani, Spain on the valley of Ganga, Jamuna, Brahmaputra, Barak, took a separation among us on the bank of this, came into nomenclature as Dimasa, Boro, Khus, Rava, Hajong, Galo, Chiwa, Chitra, Deuri, Kengal, Sunwal, and Métis, and others. Now we see over them. All are the brothers, blood brothers. Today I came to meet here our brothers. I am very happy, delight and love them. I convey my presentation and bow down on them. Juthai Namaskar. ये मेरा पोएम का टाइटल है प्रेजेंटेशन दिमाग में यौशांति. जुथाई नमस्कार भन्ने मरा. धन्यवाद मुक्तेश्वर कैंपराय जी. और मित्रों, अब मैं आपको मेघालय की तरफ ले चलता हूँ. हमारे बीच मौजूद हैं गारो भाषा के श्री मिर्थनार के मरख जी. Good evening to all. I came from Meghalaya, from the town of Tura, West Garo Hills, place of our late P.A. Samma's town. I'll be reading Garo poem, one of the poems which I have written based on the cry of my people. I was serving as a Joint Secretary and Director in Shillong in 2014
And let me give the gist of the poem. On 8 December 2014, I read the news from the Shillong Times. It's written and reported that mother of 4 children were taken out from her house, sucking down husband and children, make her sit in front of the courtyard, shoot her on forehead at point blank. On the morning, I read the newspaper, and it has gripped my spirit and traumatized, and this is the angst of my spirit, which I cry out as a child of the nation, the Garo nation. I shall be reading in Garo for a bit, and then there I'll go ahead with the English translation. Dagrap Nang Dedrangna, entitled in English, Don't Cry for Your Children. Pringwani Doktukana Toktok, Kroksade Bungsip Sulwal Uana, Adasak Mujret Dred Ninuaton, Salki Dred Bimak Saljadel Suana, Rumutsen, Sakni Omatram, Chak Chak Golawa, Cham Cham, Muzme Balwana. Abrin Chiren Asombolgram, Drip Chijamjo, Slamnare, Chindikjo, Kumanda. Wal Annalana, Algalpana, Sumduk, Jim Sukstrak, and Tastings, Drum, Ama, Drip Tunga, Maina. Sara Patalo, Chunga Songi, Scolding Choknoki, Chokyu Dandane, Jakwingwati, Bamskope, Mukti Iza, Sari Suri Prisa, Agan Buddha, Kutsamang, Dang, Sri Sri Knatwa, Kuranchi, Nopal, Tuom. Dangtape Nop Nang Jaksi Jakpachino, Bon Om Tumtuate. Knarwa Kata Kurang Knaza Soksina, Kuon Boda, U Ama. Agani Jangin Duksuk Nang Nedrana, Ama Zrutunga Maina, Uama, Zrutunga Maina. Dumahama Rungruahama, Nang Kusik Waran Zrunjotna, Skos Chok Sumchok Mukmi New Visa, Lensk Sakija, Zakudi Dogiza, Mayanma, Humangai, Gisikri, Geta, Chanchi Chokjajok, Bika Chadojajok, Nigakari, Dumaijo, Amkino San Grung Satsakachum, Ketchaganda, Toprama Chimprapra, Siomi Mang, Amo Chalang, Watman Kija Namun. Dagrap Indiwa Chanchina may be sikri kapong An Sremo Giza Waman Giza Ajak Sukna Warachakna Agan Turiatna Ama Nagna An Chi Apanan Chi Aman Gisi Tuninga Jokina Dirama Suni Chola Tungzaisa Jaksina Kizaisa Niyato Watataijo Kapurmi Kasikski Kna Chingisikram, Nang Skama Mamakong, Nang Okama, Nang Kuata, Tsukako, Gondoni, Ninkoni, Kabian Katong, Ni Anchipari, Solcholani, Walsal Kenani, Kabian Katong, Anchipari, Solcholani, Walsal Kenani. Sungsungantiu, Grapan Sinjani, Dugacholon, Tomtomani, Kadongani, Jaksoken, Ansingani, Songna, Dangrap, Nang de Ramna, Anchion Anchi, Jak Achet, Kanasala, Achet, Uama, Ama Nang de Ram Achet. I shall be reading in English. Don't cry for your children. As the crack of dawn knocks with great noise, unlocking the gateway swiftly, peeping through the earth's azure door, sparkle, shining, beaming droplets, golden yellow. Tender touch of breezy morning through the trees, inviting birds chirping in the air, gracefully playing with air, stretching forth its hands and legs in gloomy summer pleasant, delighting to soul on seeing and hearing, what more to ask. Thou speak not, nor beacon with joyous humming song in Garo Aloma, deafening to hear. Here to my ear, unappealing, unmoved to me, such moments of happiness. Overcast daylight with
cleansing darkness, yet yield not one moment of joyfulness to me. Mountains and trees break down in complete silence, nor echo blasts of stream and waterfalls. Twilight overcast, unable to see future, felt the touch of coldness and gloom. Mother, you keep quiet. Why? Sat down and bending head, looking downwards at your own courtyard, unmoved. Keeping let loose hands, sat on chair and held back. Neither looked up nor speak a word. Speak just a word, comforting sweet voice once more, soothing to hear. Touch of warm hands, feel the tender strokes of your fingers. Sweet lovely voice of yours, never will be heard again to us. Speak a word, O my mother. Life's joy and happiness, speak to your children. Stay in complete silence. Mother, why? O my mother, why do you keep quiet? Your tone of voice lost completely and worn out forever. Will you not speak once more, to be heard and remembered in life? Looking down, bending heads and closing eyes. Stay unmoved, won't you stand up or walk? Unmindful of me, unable to guard up courage, crushed and overpowered, words oblivious. Like a crab in a hole with the pencil bones, or as red biting ants swarming in aggression. In winning like warrior chalam, what may come me in that join with you together. In winning, in left unattended alone at your own courtyard with no aggression, crying out, "Oh my mother!" Shielded with malam. Malam is a god of sword. Howling sharpless, tossing spear, set aside your life, seemingly looking at sin, fleeing away helpless, fearful as chicken-hearted bee. Don't cry. Don't think not, cold-blooded, timid-minded person. Never panic nor felt it dreadful to avenge that, and tranquilly cry out to your mother. Flow of father's blood that was unknown for headhunters by the British. Flow of father's blood and mother's heart trickling within your children in search of opportunity to retaliate, couldn't put down, rending heart, left them untouched. We heard your grief and heartfelt misery. We hear your cry loud and clear in unfathomable sorrow, uncontrollable, ungrateful days and nights, never-ending bruise and shielding of blood. We wail in every nook and corner in the motherland, peace and hope. At your doorstep, healing for the land is within your reach. Don't cry for your children. Born in blood of Achik by literally it's called nation who bite the dust and sworn to protect the land. That's why we call ourselves Achik, not as Garo. So born in blood of Achik. Hail Achik, oh my mother, your children is Achik. Thank you. धन्यवाद भरत जी। और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री रूपलाल लिंबू जी को, जो सिक्किम से हमारे बीच मौजूद हैं। सर्वप्रथम मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं सिक्किम से आया हूँ। ये सिक्किम नेपाल बॉर्डर के नज़दीक में एक रिमोट एरिया है, इसीलिए मैं थोड़ा भाषा में प्रॉब्लम हूँ। मैं एक लिंबू मिथोलॉजी का रिसर्चर हूँ, अपना ही भाषा का, और मैं समय के खेल से आगे बढ़ता हूँ। लिंबू भाषा का कविता एक पंक्ति अनली मैं रीडिंग करता हूँ इसमें, और टोटल हिंदी में अनुवाद का मैं सुनाता हूँ। थोड़ा मेरा भाषा में त्रुटि हो गया जो क्षमा चाहता हूँ। और चलो, ये लिंबू भाषा का है कि लेसा
asujati kuat ani kerek le nepak u ikla hak sok lago tum yang hang hare kaun ha ani kerek le penji ni pemik hare ni surabot sang basang mahare kaun ha ani ma ban semua wati hak le men lori medi lor batu ani so tim sakting samji mondom hak le men lori batu hakin ke saat sujati kuat ये कविता मातृभाषाओं और आदिवासियों के लिए ये कविता तैयार है और अनुवाद मैं सुनाता हूँ, थोड़ा विनती करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। ये भाषा का प्रॉब्लम है, इसीलिए तो यह सलाह है। हम सभी लोगों के कानों में आवाजें गूंज रही है दिशा निर्देश देने वाला की। हमारे नयनों से देख रहा है उन पिता पुरखों ने बचाने कोशिश की हुई, अपने जातीय वेशभूषा और गहनाओं न छोड़े चिल्ला कर बोल रहा है। हमारे पिता पुरखा धर्म कर्म और रीति रिवाजें कभी न भुला दो, वे विनती कर रहा है, इसलिए तो सलाह है। हमारे अपने अपने निजी मातृभाषा को अनभिज्ञ लोग भी हैं, पर क्या करें यदि माँ बाप में ही सिखाते नहीं तो। अपनी अपनी जातीय मातृभाषा गहना और धर्म कर्म से लाज मानने वाला लोग भी है, पर क्या करें माँ बाप ने ही दिखाए नहीं तो। फिर भी एतराज नहीं आए, इसलिए तो सलाह है। डॉक्टर फिर से सुसज्जित बनाना है, पूर्व पिता पूर्वज के जातीय गीत गाना है, पश्चिमी नहीं अपनी ढांचा से नाचना है, इसलिए तो यह सलाह है। हमारी संपूर्ण आदिवासियों बिना घर बढ़ाए आगे बढ़कर युद्ध करें, लेकिन हथियारों और पत्थर से नहीं, बल्कि अपने पिता पुरखों के कर्मकांडों को लेकर। हिमालय से तराई मैदान तक फटकना है, चारों ओर हिलाना है, पर धनुष तीर और बंदूक की गोली बारूदों से नहीं, ज्ञानमय लेखों से पीकर, इसलिए तो यह सलाह है। पहाड़ पर्वत नदी नाला को भेदन करने के लिए अग्नि ज्वाला प्रकट करना है, पर जंगल बस्ती शहरों में आग लगाकर नहीं, बल्कि समाज संगठनों को आगे बढ़ाकर। भूमि के धूल को बादल जैसा उड़ाना है, आसमान में भी आवाज बनाते हुए पत्थर मारना है, लेकिन पहाड़ पर्वतों तोड़ कर नहीं, बल्कि समाज में फैले कुविचारों को नष्ट कर। यही इसलिए तो यह सलाह है। ब्रह्मपुत्र और गंगा यमुना के बीच में उगे हुए भेड़ बनकर निकला है, पर महुबारे बनकर नहीं। पुरखाओं को संस्कृतियां उस नदी पर, नदी की घाट में बहती जा रहे हैं। हम सब मिलकर यमराज से प्रार्थना करना है, हम दीर्घ जीवित होने के लिए नहीं, बल्कि अपनी प्राचीन रीति रिवाजों को संरक्षण को बचाने के लिए। इसलिए तो यह सलाह है। पत्थर और लोहा को परस्पर टकराकर अग्नि ज्वाला प्रकट करना है, पर भांग सिगरेट को धुआं निकलने के लिए नहीं, बल्कि अपनी चूल्हों में आग जलाने के लिए है। जनजातियों के घर घर की दौड़ से आगे खड़ा होना है, न कि उन लोगों से भीख मांगने के लिए नहीं, उन लोगों को उपदेश देना है और अच्छी खबरें सुनाना है। इसलिए तो यह सलाह है। धन्यवाद। धन्यवाद रूपलाल लिंबू जी, बहुत ही प्रभावशाली आवाज में जो है आपने अपनी कविता सुनाई।
और हालांकि आपने पहले क्षमा मांगी, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी क्षमा मांगने की, बहुत स्पष्ट उच्चारण के साथ। और मित्रों, हमारे जो आज का कार्यक्रम शेड्यूल था उसमें हमारे एक कवि अभी तक पहुंचे नहीं हैं, वो रास्ते में है, पहुंचेंगे, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि उनको हम लोग कल के किसी सेशन में सुनेंगे। और उनका जो 10 मिनट का समय हमारे पास है तो उसका उपयोग करते हुए मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहूंगा कि 1-2 छोटी टिप्पणियां जो है 2-2 मिनट की हम लोग दर्शकों के बीच से, श्रोताओं के बीच से ले। तो हमारे बीच मौजूद है मणिपुरी भाषा के बहुत प्रतिष्ठित लेखक श्री किरण कुमार जी। मैं उनसे चाहूंगा कि 2 मिनट वो कुछ बोले। My respects to all the great literature fraternity of India, and my compliments to all the poets who have gathered here. And it was a touching moment for me when Rabindra started reading her poem. It touched me really, so I dared to go on stage and touch her hands. Excuse me for that, if it has created tendencies to all of you. And yes, I'm all. That was beautiful rendition. And Imol is such a community who is facing the trait of being vanished from Manipur itself. It's a small minority community. And I took the opportunity of bringing Mr. Sahitya Imol here to this festival of literature. And Muteswar, I know him since many long days. And I'm very glad that I'm finding the opportunity of seeing Mr. I forgot your name, Marak, Mr. Marak here. And of course, Limbuzi, you touch my heart with your beautiful, beautiful poem. And Chandrakant Mura Singh is my friend who has been working as the director of Nicole at Agartala. We shall be organizing many more tribal writers meet shortly in Northeast. And not only in Northeast, we'll be tracking it outside the Northeast also to other states. And I'm looking the goodwill of Mr. Dr. Rabindre Deves, who is also very close to me. Really, I'm looking for, and I'm asking K. Srinivasa Rao also, that I will organize all India tribal writers meet in Imphal very shortly. So with these words, I'm very happy. I don't have any words to express the happiness. I'm truly indebted to all of you, to all the writers. Thank you very much. Thank you. Thank you. मित्रों, सुदूर पूर्वोत्तर के बाद इधर उत्तरी क्षेत्र की ओर ले चलता हूँ। कश्मीर से हमारे बीच रफी मसूदी साहब हैं, वो 2 मिनट कुछ बोले। Ladies and gentlemen, and Mr. President, good evening. In fact, I just wanted to compliment Sahitya Akademi and the person who has conceived and had to conceptualize this program. I worked in Northeast for 9 long years. I'm the person who started Northeast in service of All India Radio in Shillong. I'm the person who started the Kilashar FM station. I worked in CPC in Doordarshan in Guwahati, and I worked in the Aizawl also. And long back in 1990, when P. Upendra, the then Information Broadcasting Minister, started our Kendra in Shillong, he asked me to translate the tribal language and literature into either Hindi or English. So I started a program from Shillong, from Northeastern Service of All India Radio, and we named Sir Folklore Retold. So we created the folklore of these tribal people in our theatre, in our studios, and then televised it in a manner that the person in Kashmir
would understand the language, Mishi language, Tamkhul Nagas, Pai, Bodo, Rabas, there's all these tribes, and Manipuri. I was really touched with Miss, because this is the real life. Mr. Lim was also. And perhaps the people who have come from other parts of this beautiful India, they were not knowing that how they feel. इनका दर्द क्या है, इनके दिल में क्या बसता है, क्या एहसास है इनका. लेकिन जब आज आपने इनके शब्दावली को देखा, आज आपने इनके भाषा को देखा, तो आपको लगा कि देख ये भी तो हमारी तरह सोचते हैं, ये भी तो हमारी तरह फील करते हैं. और इनका जो ट्राइबल कल्चर है, इनका जो ट्राइबल लाइफ है, इतनी विविध है कि दैट I was there for the Northeast. In Nagaland, we used to broadcast in more than 50 languages. But every half a kilometer you have a language. And then it was sometimes very difficult to justify. इनका करने से ये नाराज होते थे, इनका नाराज से वो नाराज होते थे. So this was what in Northeast is. It is such a beautiful. Since I am from North, they are from East. So we join together and make it Northeast. God bless you. Thank you. धन्यवाद सर. और अध्यक्षीय वक्तव्य और पाठ के पहले नॉर्थ और ईस्ट के बीच में पंजाब के, दिल्ली के नजदीक पंजाब ले चलता हूँ. हमारे बीच हैं पंजाबी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि और कथाकार श्री मनमोहन जी. उनको Friends, first of all, I congratulate Sahitya Akademi that they have organized this conference of North-East tribal languages. Recently, I had the experience to organize the 550th birthday anniversary of Guru Nanak Dev Ji on the occasion of that opening of corridor in district Gurdaspur called Dera Baba Nanak. So the design of the poetry festival we charted like this thing. The people from other than Punjabi languages, they come and they recite their poem on Guru Nanak in their own language, and then their translation version will be present by the translator of Punjabi. You will imagine and you will astonish to know the people from Northeast who participated. Kiran Kumar Singh and one of our friends, they sent the people from that rural area. They have so much deep understanding of the ethos and the tenets of the Sikhism and the philosophy of Guru Nanak, the humanistic profile of Guru Nanak Gurbani. And though there are linguistic limitations, there are diction limitations, but the feeling, how they express it was very much appreciated by the Punjabi audience there. So you see, language has the barriers, but how to transcend those barriers, it depends on the human feelings and the emotions and the expression. So I congratulate, they have really portrayed their language in a very sensitive manner, especially the lady. And one thing I feel, whatever you live or whatever you think, it spontaneously come into your expression or in your
on your text. So if she is working as a human right activist or social activist, that activism automatically will start reflecting into the expression. And especially Limbosab, he has expressed and that मशवरा जो उन्होंने दिया है, सलाह जो कहे हैं, और वो बहुत कमाल है. और but I feel the folk wisdom and the wisdom which is not yet very civilized and which is away from the so-called civilization, that has the real essence of the life. And all of the poets, especially from Meghalaya and Bihar or Manipuri, has a wonderful expression they are having. And the poem which, the small poems which he presented really touch our heart. Or especially I made the point with myself that I will attend this because they have the very pure and raw knowledge, folk knowledge of those areas, and which is unpolluted. Thank you very much. Well said, मनमोहन जी. Well said. बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी. और मित्रों, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री चंद्रकांत मुरा सिंह जी को, जो जिनसे अनुरोध होगा कि वे हमें कुछ नॉर्थ ईस्ट की लैंग्वेजेस को लेकर के, वहाँ के कल्चर को लेकर के, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता को लेकर के कुछ 10 मिनट हमें बताएं भी, और उसके बाद 10 मिनट फिर अपनी कविताएं सुनें. So beautiful words you are doing here. So hearing these all words, I want to say one word only. Joto kok khnawai yang kok thaise ma sanai nayo, o kok khnawai kok thaisi khnake khnathon ang o kok thaise no sanani nayo. I want to say one word only. Even if it confronts 10 counters, I want to say one word only. Hearing all those counterpoints, I shall want to say that one word. Half of it I said to the blossom. First it grew grave and then sprouted joy. Yes, the flowers know how to be happy. But when the blossom turned into a garland, came chasing me the other half of the world withered. No one likes to hear dry words, even if true. So let me start with the succulent tale of the flower. I did. But what went wrong? My listener fumed and shouted, "A gun! A gun! Get me a gun!" On whom is the anger? On the flower or on me? I never knew. Come on, take one more swig. Have you feel? Here is full bottle for you. The man was gulping and chattering, pouring out worse and worse and worse, because words are so cheap and so much in supply that no government pays any heed to them. These wretches asked for rice,
the price went high in the ration shops. Will he understand if I tell it to him now? Will he understand if I tell it to him now? I want to say one word only. Half of it I said to the blossom, but I did not like its ways. If you want it so, I can say it to the gun. If you want it so, I can say it to the gun. I can go into the barrel of the gun and then pour out humming in a folk tune. I want to say that one word only. This is the folk tune. Now that folk tune that should come even through the barrel of the gun. Wow. We know, we were enjoying about the road, about the identity, about mother tongue. Actually, road, without identity, हम जो भाषा का बात कर रहा है, करता है, ये भाषा कैसे रहेगा? हिंदी बहुत कच्चा है मेरा, तो हिंदी में कहना चाहूंगा। Without road, हम ऐसा ट्रेंड था, particularly नॉर्थ ईस्ट में भी हम लोग देखा है किरण, कि ऐसा ट्रेंड था कि अपना अपना मदर टंग में हमने कोई लेखक लिखना नहीं चाह रहा था। हाँ, जो किरण also was trying to write in English something. I myself in Bengali, somebody in Assamese, like that. Even some indigenous writers, thinkers, they were trying to write in Manipuri, Inuit state. So it happened. ये हो रहा था। साहित्य अकादमी ने इसको बदल दिया है। साहित्य अकादमी, this has been done by Sahitya Akademi. 1995 साहित्य अकादमी ने फर्स्ट विजिट किया है नॉर्थ ईस्ट में। मेरा ख्याल में मैं याद कर रहा 1995 साहित्य अकादमी का then सेक्रेटरी इंद्रा चौधरी, प्रेसिडेंट अनंत कृष्णमूर्ति, नहीं, before that, President Anantamurthy. Yeah. And Nirmal Kanti Bhattacharya, he was regional secretary in Calcutta at that time. He visited. And then it started here and there, Shillong or Guwahati or Imphal or Agartala, like that. ज्यादा दिन नहीं हुआ है, हम एक दूसरे को नहीं जानता था। इंडिजिनस राइटर्स लोग अपना परिचय एक दूसरे नहीं है, हम खुद अपना परिचय भी नहीं, हम नहीं जानता था। ऐसा होता। तो अब देखिए, मेरा नाम चंद्रकांत मुरा सिंह है। मेरा ये चंद्रकांत मेरा भाषा नहीं है, हमारे माता पिताजी ने मेरा भाषा में मेरा नाम नहीं रखा है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कितना चुरान तो एक रूप है। तो ये बदल रहा है क्योंकि हमारा रूट, हमारा जो रूट है ये नीचे नहीं जाने से, हम पाताल कहता है, ये नीचे नहीं है, पाताल तक जाना चाहिए। रोड जितना नीचे तक जाएगा, पाताल तक जाएगा, वो ऊपर वो इतना ही जा सकता है क्योंकि गिरने का डर नहीं है। रोड कम होने से उनको थोड़ा सा हवा आने से गिर जा सकता है, लेकिन आसमान में जाने के लिए, हाथ को आसमान को छूने के लिए नीचे बहुत गहरा तो जाना चाहिए।
And this, all the writers and poets, they are doing that. So I am proud of them. हम लोग ये और भी अच्छा टेस्ट मिलेंगे इंडिजिनस राइटिंग्स. आज कितना अच्छा लगा है, कितना एंजॉय किया है. तो ये ऑल इंडिया ट्राइबल राइटर्स कॉन्फ्रेंस है, हमने मिलते रहेगा 3 दिन तो. सो लेट अस एंजॉय फॉर 3 days. थैंक यू. कुछ गा करके सुनाइए. Corporate songs. Corporate songs. ये मॉडर्न है, क्योंकि वो जो इसका जो ये है वो जो 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 पॉप ट्यून है, पॉप ट्यून तो कुछ नहीं. बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकांत मुरा सिंह जी को. और इस पूरे सत्र में जो हमारे बीच कवि मौजूद रहे, उन लोगों ने अपनी अपनी भाषा का, अपनी अपनी संस्कृति का स्वाद दिया. अपनी भाषा के जो उनके स्वर हैं उसको आपने जाना, समझा. और अकादमी इस तरह के अनुभव आपको लगातार कराती रहेगी, कराती रहती है. आपसे अनुरोध होगा कि आपके जो भी दोस्त मित्र हों, अभी आप देख रहे हैं कि हमारा पूरा कार्यक्रम 6 दिनों का है, 29 तारीख तक चलना है. इसमें अनेक तरह के कार्यक्रमों को हमने इसमें संजोया है. और जो भारत भर के जो अलग अलग तरह के स्वर हैं, आदिवासी भाषाओं पर इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस विविधता को खोने के डर से हम उबरना चाहते हैं, तो उसको आप पूरे साहित्योत्सव में उसकी छवि आप देखेंगे, उसकी छाप देखेंगे कि उसको हम लोगों ने शामिल करने की कोशिश की है. और हमारे बीच युवतर लेखक से लेकर के बुजुर्ग लेखक तक, एक तरह से आप देखें कि 20-21 साल के उम्र के लेखक से लेकर के और 90 वर्ष तक के लेखक हमारे कार्यक्रमों में शामिल हैं. जो लगभग 250 लेखकों की जो एक पूरी श्रृंखला है, जो आप देखेंगे हमारे निमंत्रण कार्ड को, तो उसमें अलग अलग राज्य से, अलग अलग भाषा क्षेत्र से, अलग अलग कम्युनिटी को भी आप कहें. कम्युनिटी पर साहित्य ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन जो अभी का एक विमर्श चल रहा है कम्युनिटी को लेकर के, आदिवासी साहित्य विमर्श, दलित विमर्श या फिर स्त्री विमर्श, तो जितने भी इस तरह के सेक्टर्स हैं सबको हम लोगों ने छूने की कोशिश की है. और एक जो महत्वपूर्ण, जो पिछले साल आप लोगों ने देखा था हमारे कार्यक्रम में, एक ट्रांसजेंडर पोएट्स मीट का एक कार्यक्रम शामिल था, तो उसको हमने इस बार थोड़ा और विस्तार दिया है. LGBTQ इस समूह से, जो घोषित रूप से इस समूह में आने वाले जो कवि हैं, उन लोगों को हमने आमंत्रित किया है, जिसको इसके मुख्य अतिथि है प्रतिष्ठित अंग्रेजी कवि होशांग मर्चेंट जी, जो हैदराबाद से हमारे बीच आएंगे. उसमें विशिष्ट अतिथि हैं राज राव जी. इसके अलावा और भी विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न भाषाओं के कवियों को हमने आमंत्रित किया है. वो एक कार्यक्रम है. उसके पहले कल जो हमारा विशिष्ट कार्यक्रम है कि अकादमी पुरस्कार से जिन लेखकों को अब नवाजा गया है, उनको पुरस्कार दिए जाएंगे हमारे अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर कंबार के द्वारा यहाँ कवानी ऑडिटोरियम में. आप लोगों से अनुरोध होगा कि उसमें बड़ी से बड़ी संख्या में अपने दोस्त मित्रों को आमंत्रित करें.
क्योंकि अकादमी के कार्यक्रम सदैव सबके लिए खुले हैं। अकादमी सभी लेखकों की है, सभी साहित्य प्रेमियों की है, ये आपके अपने घर की तरह है। और इसके द्वारा जो योजनाएं बन रही हैं, आपने हमारे हाईलाइट्स देखे होंगे कि पिछले वर्ष अकादमी के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि पूरे एक साल में हमने 700 से ज्यादा कार्यक्रमों का आयोजन किया, और यह आप लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाता है। मित्रों, हमारा एक विशेष आकर्षण इस बार साहित्य उत्सव का है कि पूर्व राष्ट्रपति और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री विचारक श्री प्रणव मुखर्जी जी का संवत्सर व्याख्यान हमने रखा है। इसके अलावा कई तरह के विचार विमर्श के कार्यक्रम हैं, पर्यावरण और साहित्य के जो रिश्ते हैं, स्थानीयता से उसका जो जुड़ाव है, उन सब चीजों को लेकर के एक संगोष्ठी है 3 दिनों की। कई विचार विमर्श के सत्र है, अनुवाद पर, प्रकाशन के चीजों को लेकर के, नाटक को लेकर के, युवा लेखकों का सम्मेलन है, पूर्वोत्तर के लेखकों से बाकी भारत के लेखकों को जोड़ने के लिए उस तरह का भी पूर्वोत्तरी कार्यक्रम है। इन सभी कार्यक्रमों में आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, और मैं इसी के साथ आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा आज के इस कार्यक्रम में आपके बने रहने के लिए। हमारे सभी कवियों का भी धन्यवाद कि हमारे आमंत्रण पर आप यहाँ आए और बहुत ही सुंदर काव्य पाठ से हम लोगों को आह्लादित किया। मित्रों, यह अखिल भारतीय लेखक सम्मेलन जो है कल और परसों 2 दिनों तक और भी जारी रहेगा। इसके साथ साथ समानांतर तौर पर और भी हमारे कार्यक्रम होते रहेंगे। आप सब उन सब में बने रहे लगातार। अभी आप हमारी प्रदर्शनी का आनंद लें, एक दूसरे से बातचीत करें। जो इस तरह के कार्यक्रमों का एक विशेष उद्देश्य होता है कि जिनको आप सुन रहे हैं, लेखक आपके सामने हैं, और भी बहुत सारे लेखक हमारे बीच मौजूद हैं, आप उनसे बातचीत करें, विमर्श करें, एक दूसरे की संस्कृति को जाने, एक दूसरे के लेखन को जाने, एक दूसरे के अनुभवों को जाने, जो अलग अलग भाषा स्वरों में होते हुए भी भारतीयता का रंग लिए हुए है। एक है जो एक प्रसिद्ध जो दूरदर्शन पर एक प्रस्तुति हुआ करती थी, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो उसको बनाने की आप कोशिश करें। और उसके बाद 6 बजे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, दक्षिण से वो प्रस्तुति है, उसमें आप शामिल हों। यह कार्यक्रम है श्री कृष्ण पारिजात, एक ट्रेडिशनल फोक म्यूजिकल ड्रामा, उसकी प्रस्तुति है 6 बजे। इधर बगल में जो एक सभागार बना हुआ है वहाँ, फिर उसमें आप शामिल हों और उसके बाद फिर आप अपने अपने स्थान पर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। I feel I have to help you.